Okay, Assalamu alaikum. Welcome to NLP. So today we will continue with our discussion on evaluating generative text, especially for machine translation. In the previous two lectures, of course, we had guest speakers and they covered topics on prompt engineering and RAG. So I'll talk about these two topics again as well later on, maybe starting today and maybe in the next lecture. But before that, we will try to wrap up our discussion on evaluation and a few other things about machine translation and general uh, general ideas regarding encoder, decoders, training, fine tuning, and so on. So that would be the agenda primarily for today. All right. So is the screen visible? All right. So we are moving towards the end of the semester, and we have only a few lectures left, and we also obviously have some deliverables left. So currently you have your assignment 3 that is still open, and then you have your project which is still open. Then we also have one last quiz. So the last quiz would be on Monday, the coming Monday. It will cover all things from the preceding quiz till today's lecture. So that would be our last quiz. And as we mentioned earlier, quizzes would be n minus 1. So one of your lower grades would be dropped while calculating your grades. uh, Regarding the assignment, the deadline is Sunday. Uh, and there have been requests for kind of reduction in the scope of the assignment. So I will discuss that and let you know. But you should continue working on the assignment uh, as usual. And the project presentations have been scheduled for the next two lectures after that. We would like to have the presentations live because you can get some feedback, and then based on that feedback, you can polish and then submit your final report. So that was the idea, and scheduling something that is out of class becomes really difficult. So anyway, we will. This has been announced, but there has been request that you should reschedule it. But right now, it is fixed for Wednesday and Sunday. So if there is any change, we will let you know. All right. Okay. So in the last lectures, before we had the guest speakers, we were talking about machine translation, and we had started talking about evaluation for machine translation. And I would say it is evaluation for, in general, anything generative NLP. So machine translation is an example of generative NLP where you generate text as an output. The result is generated text. And most of those generative NLP tasks have somewhat similar evaluations. So we talked about human evaluation, and then we had already talked about human evaluation. I'll come to that a bit later as well. But today, let me start with automatic evaluation, which is also almost always done in addition to human evaluation. So automatic evaluation, there are generally two categories of evaluation. One is based on, you can say, overlap based, and the second is based on similarity / you can say classification based.
So two broad categories of evaluation techniques, automatic evaluation techniques, and both of them usually are again done for any real world application. Okay. So let's start first with overlap based techniques. The most common that is used in modern days is what is known as CHR, CHRF, CHRP, F for F score, P for precision, CHRR, R for recall. And CHR stands for character. So this is character, F, F, precision, and recall. Okay. So as the name suggests, so this finds the overlap character wise, of course, unigram, bigram, n-gram, up to n-gram or k-gram between your generated text, which you can call the candidate, and the reference text, which you can call the gold standard. So, and then of course, you can compute precision, recall, and then the F score. So let's look at an example and see how this works. Mhm. So let's say the candidate sentence, very simple sentence. Uh, Let me make it simpler so that we can do this. So sun rises, and let's say the reference, the gold standard are, so for example, sun is rising. Okay? So we want to find how good is the generated text, which is sun rises, and the correct sentence is the sun is rising. Okay? Of course, so this can be in machine translation. So this could be translated from, let's say, Urdu or from some other language. So this is the target language. And of course, since generated text is also the target language, reference text is also in the target language. So both languages, both C and R are in the same language. And this is also true for summarization. This is also true for paraphrase generation. This is also true for any other generation task. Let's say question answering. So the answer that you generate would be C. The true answer would be R. And both of them, of course, are in the same language. Okay? So CHR character based, so we can do it unigram, bigram, till up to some k gram or n gram. Okay? So, and precision and recall, both of them, we have to compute. So let's say, let me do bigram as an example. Okay? So for the candidate C, what bigram do we have? Of course, when we are computing bigram, we will collapse the spaces and we will not extend the bigrams across the spaces. ठीक है? So हमारे पास bigram क्या होगा? Sun, SU, the UN, and then of course we will not extend across spaces. So N and underscore या space नहीं होगा. So we'll move on to rises. So RI and SE, sorry, RI rises. So RI है, फिर आपके पास IS है, फिर SE है, फिर ES है. ठीक है? So these are the bigrams in R. Similarly, you find the bigram in, sorry, in C. Similarly, you find the bigram in R. So again, we have sun, SU, UN, ठीक है? Is, so we have IS. So again, space आ गया. So RI, so IS is RI and IS, ठीक है, is, ठीक है, rising. So SI, so IN and NG, ठीक है? So ये correct है. For those who are present, double check करते रहें. So now we have both
for C and for R, then now simply we need to find the overlap and then compute precision and recall. ठीक है? So we would like to see कि overlap between C and R क्या होगा. So SU आपके पास उसमें भी है, R में भी है, UN भी है, ठीक है? So RI भी है and IS भी है और SE नहीं है and ES भी नहीं है, ठीक है? So precision क्या होगी? तो दो चीज़ें नहीं है. हमारे पास SUUN, so and then RIIS, तो चार हो गए, so 4/6. So CHR precision बाईग्राम का हम कंप्यूट कर रहे हैं, so basically 4/6 हो, ठीक है? And similarly CHR recall क्या होगा? 4 ही है. और how many, what is the length number of bigrams in R? 8. I think there are 8 there, right? So ये आपके पास दोनों आ गए, आपके पास प्रिसीजन भी आ गई, रिकॉल भी आ गई फॉर बाईग्राम, ठीक है? And similarly you can compute CHRF. Usually for this particular task, of course, you can use the standard F1 score, ठीक है? But in practice, and as recommended in the book as well, sometimes you will also see F2 scores as the standard, ठीक है? So formula आप लोगों को याद होगा. So let's say B जो आपका है, so B square plus 1, then we have precision into recall divided by uh, B square into P plus recall, ठीक है ना? B let's say 1 है, तो this is 2 times precision into recall divided by precision plus recall, which is a standard F1 score. But in this case, usually we use F2 score, which basically gives greater weightage to the recall, not the precision, ठीक है? Greater weightage to the recall, ठीक है? So you can put it into the formula and you can get, so basically formula जो बनेगा इसका जो 5, so 5 into हमारे पास है वो P, मेरे पास है प्रिसीजन कितना था, 0.66 into 0.5 divided by 2 into precision 0.66 plus 0.5, तो ये आपके पास F स्कोर आ गया, ठीक है? And this has been computed for one sentence. Usually your test set would have multiple sentences. So if you have multiple sentences, you simply average CHRP, CHR R, and then CHRF. Simply average ले लें for all the sentences in the test set, ठीक है? So this would give you a score. But again, this is for just bigram. In practice, usually हम unigram, bigram, trigram में भी up to 4 grams लेते हैं, ठीक है? अब उन सारे grams के results को क्या करें आप? Again, there are various ways of doing that. So you can keep them separate. So keep results for different grams separate, ठीक है? That's one option. So you should keep that and maybe report that as well. The other option is take the geometric mean of
unigram to kgram values. ठीक है. So average arithmetic mean भी ले सकते हैं, but again in practice people tend to use geometric mean, which kind of is more conservative. Smaller values की तरफ ज़्यादा जाता है. ठीक है. तो geometric mean, of course, you take them, multiply all the values and divide it by the nth. Let's say n values को आपने multiply किया, then you take the nth root of it. ठीक है. So in summary फिर क्या समझ आई है? We have the candidate generated text, we have the reference generated text. For each gram, let's say bigram जो मैंने example show की है, generate all the bigrams in C, generate all the bigrams in R, find the overlap of C, of bigrams in C in R. So that is basically the matching ones. तो आप उसके बेसिस पे प्रिसीजन निकालेंगे, उसके बेसिस पे रिकॉल निकालेंगे, एंड देन बेस्ड ऑन दोज यू कंप्यूट द F2 स्कोर. ठीक है, chrF. So that's for one sentence. If you have more than one sentence, which is usually the case, you take the average over all those sentences. And since this is just for one bigram, आपके पास unigram भी है, bigram भी है, trigram भी है, 4gram भी है, then maybe you can report them separately and also take the geometric mean. ठीक है? So why has the chrF has become more popular recently? Because typically we do subword tokenization in practice, ठीक है, which doesn't map into words. These are subwords, ठीक है. So segmentation के issues आपको नहीं आने करने पड़ते. So segmentation के issues in multiple languages, for example, उर्दू में आपके पास स्पेसिस नहीं होते, वर्ड्स नहीं होते. So उर्दू में भी ये it works fairly well as opposed to a word based approach. ठीक है. And in general, in various experiments, people have found that CHR correlates fairly well with human assessment or human evaluation of generated text. But again, automatic evaluation, as I said, is usually done in addition to human evaluation. So human evaluation usually हम ignore नहीं करते. And automatic evaluation is quicker, and obviously it's good to compare models for the same data set using automatic evaluation. जब आपका models final tune हो जाएंगे, then you can do a final evaluation using humans in the humans for the evaluation. ठीक है. Initial stages में बेशक आप automatic use करते रहें, and later on you move on to humans. ठीक है. So this is the measure that is recommended. But in the literature, you'll see other measures as well. So I'll mention those as well. So one is important measure is called the BLEU score, BLEU score. BLEU stands for bilingual evaluation under study. So this was more popular and still used nowadays, but it was more popular before 2015 or 2010. ठीक है. So this is a word overlap based. ठीक है. Remember, CHR is character overlap based. So this is word overlap based. And secondly, this is only precision based. ठीक है. So it just considers precisions, not recall. इसका एक counterpart that uses just recall is ROUGE score. वो भी अभी I will mention that briefly later on as well. ROUGE score. तो वो भी एक मेजर है, word overlap based. So BLEU score किस तरह चलता है? So again, let's take the example as we had before. So C, sun rises, and R, sun is rising. ठीक है. So obviously word to word हम matching करेंगे, तो you need to segment your text. English में तो आसान है, other languages में मुश्किल हो सकता है. So that's why, as I said,
recently people have moved away from this. Secondly, word to word एग्जैक्ट मैच करना कई दफ़ा मुश्किल हो जाता है because of lemmas. For example, rises and rising, root word same है, but they will not match. ठीक है? So उसके लिए of course in the older days people have said you can lemmatize your text and then apply, then do the mapping or overlap. तो हम let's say lemmatize करते हैं तो क्या बनेगा? lemmatizing तो C हो जाएगा sun rise और R हो जाएगा sun is rise. ठीक है? So again, this is optional but usually recommended in practice for English. ठीक है? अब आपके पास ये एक सेंटेंस है, देन वर्ड ओवरलैप देखना है तो सन राइज दे आर टू बोथ वर्ड्स अपीयर इन द रेफरेंस टेक्स्ट. तो आपके पास जो होगा, बाय द वे इसमें भी यूनिग्राम है, बाईग्राम है, टिल अप टू मे बी 4 ग्राम्स हम करते हैं. ऑफ कोर्स ये स्मॉल एग्जांपल है तो हमने तो यूनिग्राम हम मैच करेंगे तो क्या होगा? हमारे पास यूनिग्राम्स क्या हैं? सन है और राइज है. बोथ ऑफ देम आर मैचिंग. ठीक है? सो मेरे पास जो ब्लू टू होगा, टू सॉरी यूनिग्राम है ब्लू वन, सो दिस वुड बी व्हाट? 2/2 1. दो वर्ड्स हैं हमारे कैंडिडेट में, दोनों अवेलेबल हैं रेफरेंस में. प्रिसीजन मेरी 2/2 इज इक्वल टू 100% है. ठीक है? बट लेट्स सी व्हाट अबाउट बाईग्राम. बाईग्राम मेरे पास इसमें था सन राइज है, ओनली वन बाईग्राम. ठीक है? इज दिस बाईग्राम अवेलेबल इन आर? उसमें सन इज है और इज राइज है, वो बाईग्राम अवेलेबल नहीं है. तो यहाँ मेरे पास ब्लू फॉर टू वुड बी 0/, प्रिसीजन निकाल रहे हैं 2 तो दिस इज 0 ऑफ कोर्स. सो 2 नहीं 1. ठीक है? सो डू यू गेट दिस पॉइंट? सो वर्ड लेवल हमने एनग्राम्स बनाने. सो बाईग्राम में सन, हमारा जो कैंडिडेट में था सनराइज था, अब वो सनराइज एक बाईग्राम है सिर्फ, बिकॉज वी आर यूजिंग स्मॉल एग्जांपल. इन द रेफरेंस इट इज सन इज एक बाईग्राम है, इज राइज दूसरा, सो देर इज नो मैच. 0/1. टोटल बाईग्राम मेरे कैंडिडेट में 1 है. प्रिसीजन ही कर रहे हैं, रिकॉल नहीं कर रहे हैं. ठीक है? सो इस तरह मेरे पास यूनिग्राम भी आ सकता है, बाईग्राम भी आ सकता है, ट्राईग्राम भी आ सकता है, एंड ऑफ कोर्स लॉन्गर भी आ सकते हैं. बट देयर आर सम एडिशनल क्विक्स you can say with this measure. Uh, the additional quicks, let's say, एक तो ये है कि this measure is clipped precision. तो clipping का मतलब क्या है? Let me take another example. Let's say candidate मेरे पास है C, and C मेरे पास है uh, so let's say the sun, the moon. ठीक है? ठीक है. ऑलराइट. सो R let's say मैं लेता हूँ the sun, the moon, sun and moon, let's say. ठीक है? तो क्लिक प्रिसीजन का मतलब ये है कि we will restrict the precision to the maximum number of times the word occurs in the reference. In the reference. So let's look at the word D. D word जो है मेरे पास कैंडिडेट में जनरेट हुआ 2 दफा.
रेफरेंस में दी एक दफा भी नहीं आ रहा एक्चुअली, सो दैट्स एक्चुअली नॉट ए गुड एग्जांपल। उसको मैं, ठीक है, तो लेट्स से दी सन एंड मून, रेफरेंस में सिर्फ एक दफा दी आ रहा है, मेरे कैंडिडेट दैट आई जनरेटेड उसमें दो दफा दी आ रहा है, तो वी विल क्लिप that word to the maximum number of times that it occurs in the reference, meaning it will clip d to 1. d को हम दो काउंट नहीं करेंगे, d will count just 1. ठीक है, तो यूनिग्राम मेरे पास कैंडिडेट में दी सन दी मून चार यूनिग्राम्स हैं। ठीक है, मैच कितने कर रहे हैं, एक दी कर रहा है। ठीक है, और एंड देन सन भी कर रहा है, मून भी कर रहा है। ठीक है ना, सो वी विल हैव 3/4, वी विल नॉट मैच द सेकंड डी, सो ब्लू वन जो होगा इसका 3/4, नॉट 4/4। ठीक है, so this is called clipping, so we clip a word to the maximum number of times that it occurs in the reference, each word. Of course in this case d मल्टीपल दफा आ रहा था कैंडिडेट में, हमने देखा कि रेफरेंस में एक दफा ही आ रहा है, तो उसको हमने मैक्सिमम एक दफा ही काउंट किया, दो दफा नहीं काउंट किया। So that's one thing that is in done also, clipped. The other thing is that it uses a brevity penalty. ठीक है, सो लेट्स से अगेन मेरे पास एक कैंडिडेट है और उसने सिर्फ दी जनरेट कर दिया, और मेरे पास रेफरेंस था दी सन एंड मून। ठीक है, सो द कैंडिडेट दैट जनरेटेड इज वेरी शॉर्ट, एंड बिकॉज ऑफ it being short, and since we are focusing on precision, it will have a very high precision, artificially have a very high precision. In this case 1/1 would be 1, but since it's a short sentence or reference बड़ा था, so we will apply a brevity penalty. ठीक है, so in other words BLEU in this case 1 जो था, ideally to 1/1 is equal to 1. ठीक है, but we will now apply a brevity penalty. Brevity penalty is given by EXP 1 minus the length of reference divided by length of C. This is a parameter that you multiply to with 1/1. ठीक है, so let's calculate this for this case. So 2.7 क्या होता है ये, एक्सपोनेंशियल 2.71 होता है आई थिंक, रेज टू पावर ऑफ, सो 1 माइनस आर की लेंथ कितनी है, द सन एंड मून 4 है। ठीक है, और मेरे पास कैंडिडेट की सी है, आई गेट दिस आंसर। So 0.05, so we have penalized it. So in other words फिर मेरा जो ब्लू होगा 1 would be 0.05 into 1, which is 0.0, 1 नहीं देंगे हम। ठीक है, so any questions so far? All right, so the blue score, as I said, is precision based. It also includes the notion of clipping, and it also involves brevity penalty. So you compute the blue score, which is precision, for every sentence in your test set. ठीक है, and then if you have multiple sentences, which is usually the case for test set, you take simply the average, arithmetic average. But since this is for unigram,
बाईग्राम ट्राईग्राम सारों का करें तो सारों के आप सेपरेटली रिपोर्ट कर लें प्लस ज्योमेट्रिक मीन ले लें, जिस तरह CHRF के लिए भी कहा था हमने। ठीक है, सो रिपोर्ट सेपरेटली फॉर unigram to let's say 4 gram, and the second option is geometric mean of these. Of course, this is after you have taken the average over all the examples. Let's say आपके पास 100 examples हैं टेस्ट सेट में, आपके पास 100 ब्लू स्कोर्स आए होंगे फॉर यूनिग्राम, उन 100 ब्लू स्कोर्स को आपने पहले एवरेज किया। ठीक है, सो दैट वुड बी योर स्कोर फॉर यूनिग्राम। इसी तरह आपके पास 100 वैल्यूज आई होंगी बाईग्राम के लिए, उनको एवरेज किया, दैट वुड बी द स्कोर फॉर बाईग्राम। तो इसी तरह ट्राईग्राम के भी किया, 4 ग्राम के भी किया। यू रिपोर्ट दीज प्लस यू रिपोर्ट वन फाइनल वैल्यू विच इज द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ ऑल ऑफ दीज। ठीक है, सो ब्लू स्कोर की कंप्यूटेशन जो है ना थोड़ी सी एम्बिगुअस है, यू माइट फाइंड सम स्लाइट वेरिएशंस इन द लिटरेचर, सो आई एम काइंड ऑफ वार्निंग यू। सो बुक में भी थोड़ा सा एम्बिगुअस सा लिखा हुआ है, तो आई वुड सजेस्ट कि जो मैंने बताया ट्राई टू फॉलो दैट इन द क्विज़ेस एंड एग्जाम्स। प्लस ऑफ कोर्स इफ यू यूज एनी टूल, तो टूल में प्री कोडेड होगा, तो देन यू शुड यूज दैट प्री कोडेड वर्जन। ठीक है, कोई भी आप लाइब्रेरी यूज कर रहे हैं तो उसमें ब्लू स्कोर कोडेड होगा, यू शुड ट्राई टू यूज इट एंड देन मेंशन विच टूल दैट यू हैव यूज्ड। ऑलराइट, सो so we have looked at character overlap techniques, and we have also looked at word overlap techniques, the blue score which is word overlap based. So let me quickly mention ROUGE as well. ROUGE is also word overlap, but this is recall based. ठीक है, so rest of the approach is same. So recall में क्या होता है कि आप डिनोमिनेटर जो होता है वो लेंथ ऑफ, और सॉरी डिनोमिनेटर में द नंबर ऑफ ग्राम्स इन द रेफरेंस यूज होगा फॉर रिकॉल, while in the case of precision it is number of grams in the candidate, in the generated text. ठीक है, so ROUGE is also an old measure. This is also sometimes used in addition to BLEU, although ROUGE originally ये summarization के लिए ज़्यादा popular था, अब भी लोग summarization के लिए यूज़ करते हैं, but as I said they use it with additional measures as well, CHR भी यूज़ कर लेंगे, human evaluation भी कर लेंगे। Okay, any questions? Okay, so actually there are some additional automatic evaluation strategies as well. So if you recall, previously we are focused on overlap, and especially in the case of word overlap, that is often problematic. Exact overlap, exact wording हो सकता है हम ना यूज कर रहे हो, but still our candidate is correct. ठीक है ना? So we actually need a more robust way of comparing words or comparing characters or subwords. ठीक है? So this obviously leads to techniques that are based on embeddings. ठीक है, और representations based. So इसमें I'll just mention two strategies and then I think उसमें of course variations काफ़ी हैं इसमें भी. Uh, so let's say one strategy is, let's say you do have some small uh, sample of human annotated data set. So let's say human, so sample of human annotated ratings
are available. What does this mean? So let's say आपके पास C भी है, R भी है और some rating है. ठीक है? So rating can be from 1 to 5 and 5 means that C is a good generation uh, as compared to when compared to R as done by a human being. ठीक है? So rating आपके पास एक scale है. So let's say आपके पास ये data set है. So then you can use a pre-trained bidirectional model like BERT to train this on BERT and then use it to rate new examples. ठीक है? So use the data to fine-tune BERT with a classification slash you can say classification कह लें या rating head. Basically rating head भी classification भी आप समझ सकते हैं या you can say it's a regression but what you call ordinal regression. So you want 1, 2, 3, 4, 5 as outputs. पर क्लासिफिकेशन से भी आप कर सकते हैं, नॉट अ बिग इशू. ठीक है? आपके पास बायोग्राम. सो क्या आपके पास जाएगा बर्ट में? सो यू हैव ए CLS टोकन. ठीक है? यू हैव द कैंडिडेट S C which is your generated text. Then you have the separator and then you have R and then of course you have another separator. So the classification head is applied on the CLS token. Okay, so you fine tune this on your, so the BERT of course is previously pre-trained on the language. So it already knows the language. Okay, and now you have some small sample of human ratings, maybe hundreds, maybe dozens up to 100. You fine tune your BERT on this training. CLS token के जो classification head को आप ratings के basis पे classify कर लें. ठीक है? So once you have this fine-tuned model, then simply you give a new C and you give a new R, it will tell you the rating. ठीक है? So in other words, we have now built a model that can automatically give a rating for a candidate given its reference. ठीक है? So of course, in this approach, you do need some small sample of human annotated data where you have pairs of C and R and their ratings. Then you use a bidirectional model to fine tune. And then once the model has been fine tuned, use it on unseen examples for rating. So let's say, so that's a popular approach if you have some samples. But if you don't have any samples, then simply you can give, you can create embeddings for your C. So basically generate embeddings for C and R using a pre-trained model for that language, and then simply then take the cosine similarity between the between them. ठीक? So the strength of that cosine similarity will tell you the strength of their correctness, meaning that remember cosine similarity varies from 0 to 1. So if you have a value that is higher or closer to 1, it means that that is a good candidate that has been generated. Okay? So in this case, you don't need any human to label some examples for you. You simply use a pre-trained BERT, which is trained on the language, and generate sentence embeddings.
So those embeddings comes from the CLS token. आप वो पूरा कैंडिडेट दे दें, CLS टोकन की जो embeddings होंगी वो ले लें, रेफरेंस दे दें, CLS टोकन के embedding ले लें, दोनों का कोसाइन लें. If the cosine is high, it means that the candidate is good, otherwise not good. And since this is done for one sentence, multiple sentences, we'll simply take the average. ठीक है? So any questions? All right. Okay. Uh, all right. So this was about evaluating generated text and especially evaluating machine translation. So coming back to human evaluation, we mentioned that there are two dimensions that we typically evaluate. One is adequacy and the other is fluency. So these two dimensions are, I think, appropriate for machine translation. But if your task demands some other dimension, then you can always include that in human evaluation. So for example, let's say आपकी summarization की task है. So summarization के task में adequacy भी use कर सकते हैं, fluency भी use कर सकते हैं. Adequacy means कि कितना वो original content को summarize कर रहा है. Fluency is how well is the summarization in terms of grammatical information or correctness. But maybe for summarization, you might also want to include some additional measures like maybe succinctness. So again, you will have to give a definition के succinctness का मतलब क्या है. So would you, and then you will ask the human rater के, is this a good succinct summary of the original text or not? तो वो भी rating देगा. So the point that I want to make is that adequacy, fluency is not like set in stone. इसके अलावा आप और भी dimensions include कर सकते हैं in your human evaluation. ठीक है? तो succinctness हो सकती है, simplicity हो सकती है. Because sometimes when we are trying to summarize, we would also like the summary to be simple. The wording used in the summary is simpler. So simplicity का एक आप भी एक dimension use कर सकते हैं and ask the annotator to determine how simple is the summary as compared to the original document. ठीक है? And of course, if your problem is something else, then you can obviously include other appropriate dimensions as well. Okay, so a few comments on the corpus for machine translation and in general corpus for NLP tasks. The NLP community has actually spent quite a bit of time in the last, I would say, 20 years, and it has been a trend since NLP started in the 60s, but in the last 20 years especially, to generate large amounts of data sets. Okay? So this is actually a strength, I would say, for NLP, as opposed to some of other techniques like data mining के और कोई areas हैं वहाँ data sets इतने available नहीं है. But NLP, you will have
usually find lots of data sets. But usually those data sets would be for high resource languages. ठीक है? So low resource languages की generally data sets कम हैं, but again उनमें भी बढ़ रहे हैं, but generally कम है. So one thing that we will always need in our practical application is how can we get more data. ठीक है? So and of course this is task dependent. हर task के लिए you will have to devise your own strategy. So human usually are also in the loop, but we will also like to use some innovative ways of automatically generating more data. ठीक है? So, so in general, the strategy of data augmentation is quite important, but as I said, it's task dependent. हर task के लिए आपको सोचना पड़ेगा separately कि मैंने data को किस तरह augment करना है या generate करना है या additional samples लेने हैं. ठीक है? Okay, so in the context of machine translation, there is a strategy called, for data augmentation, there is a strategy called back translation for data augmentation. ठीक है? So what is this strategy? So let's usually हमको for machine translation you need parallel corpus, meaning that you need to have the source language and the target language pairs. So pairs of sentences or paragraphs in the source language and in the target language. So there are two different languages, S and T. Source language and target language. So if both of them are high resource language, usually you find those data sets readily available. So even for some low resource languages, you might find pairs that are available, but for other combinations of those pairs, maybe data set is not available. So just for an example sake, let's say आपके पास so let's take the example of, let's say you want to translate Urdu to, let's say, Pashto, for example. इस पेयर्स के आपको चाहिए डेटा सेट्स. लेट्स से इस पेयर का आपके पास नहीं है अवेलेबल. So what can you do? So maybe you can use, let's say you do have data sets for Urdu, let's say, and English. And let's say you also have data sets for, let's say, Pashto and English. ठीक है? So what you can do is, usually monolingual corpora आपके पास available होता है. तो आप उर्दू को, आप उर्दू से आप उसकी इंग्लिश जनरेट कर लेंगे. जब आपके पास इंग्लिश आ जाएगी, उसकी इंग्लिश से आप पश्तो जनरेट कर लेंगे. So now you can now pair Urdu with Pashto and get that data set. So do you get this point? So usually Urdu English का data set है, Pashto English का भी है. So you have a model for Urdu English or English Urdu. Similarly Pashto English और Pashto English Pashto. So आपके पास monolingual text आपके पास उर्दू का भी है, पश्तो का भी है. Let's say उर्दू का आपके पास काफ़ी है, तो उर्दू से आप इंग्लिश जनरेट करेंगे. ठीक है? वो इंग्लिश आप इंग्लिश टू पश्तो में फीड करेंगे, वो पश्तो जनरेट कर देगा. तो आपके पास पेयर्स आ जाएंगे, सिंथेटिक पेयर्स ऑफ उर्दू पश्तो, एंड देन यू कैन यूज दैट टू ट्रेन योर मॉडल. ठीक है? तो दिस इज वन वे ऑफ बैक ट्रांसलेशन. ठीक है? एंड बाय द वे यू कैन डू दिस मल्टीपल वेज एज वेल. आपको मल्टीपल सैंपल्स चाहिए. लेट्स से उर्दू की ट्रांसलेशन इंग्लिश के साथ भी अच्छी अवेलेबल है, उर्दू की लेट्स से फ्रेंच के साथ भी अच्छी है, पश्तो के साथ इंग्लिश की भी है, पश्तो की फ्रेंच के साथ भी है. सो यू कैन गेट फॉर द सेम उर्दू सेंटेंस you can generate through French and you can generate through French and through English. So आपको दो एग्जांपल्स आ जाएंगे. तो आपके पास ज़्यादा एग्जांपल इस तरह भी जनरेट कर सकते हैं. ठीक है?
ओके, सो अनदर सिनेरियो कुड बी के आपने थोड़ा सा, सो लेट्स से आपने उर्दू, सो उर्दू का लेट्स से डेटा सेट थोड़ा है हमारे पास, इंग्लिश का ऑब्वियसली ज़्यादा है, ठीक है, दैट्स सो उर्दू इज लो रिसोर्स, इंग्लिश इज लोअर, एंड लेट्स से बाई टेक्स्ट भी इसका कम है हमारे पास, उर्दू इंग्लिश पेयर्स कम है, बट ऑब्वियसली इंग्लिश मेरे पास बहुत ज़्यादा है। सो जो मेरे पास थोड़ा सा पेयर होगा, आई आई ट्रेन ए मॉडल इन द रिवर्स डायरेक्शन, इंग्लिश टू, so using so using small English Urdu pairs, so train and empty from English to Urdu, ठीक है, so obviously this is not, it's not going to be a very good model, but since English का आपका पास बेताशा डेटा है, तो इंग्लिश का फिर आप उस इस मॉडल में डाल के उर्दू जनरेट करते रहे, ठीक है, so this is another way of back translation in which we do not go through an intermediate language, we just use the two languages, but since one language is more readily available as opposed to the other, जो थोड़ा डेटा सेट के ऊपर एक बेशक स्मॉल मॉडल ही बना लें, उस मॉडर्न मॉडल से डेटा जनरेट कर लें, तो ये डेटा भी आप जब आप ट्रेन करेंगे यू विल गेट बेटर रिजल्ट्स, सो इट, ठीक है, सो डू यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट, पहली स्ट्रेटजी ये थी कि आपके पास मॉडल्स अवेलेबल हैं फॉर ए लैंग्वेज एंड a popular language like English, दो दरमियान में नहीं है, तो you go through the intermediate language and generate the pairs. In the other case कि आपके पास थोड़ा सा है डेटा, उससे एक छोटा मॉडल बना लें and then use the bigger language which is in this case English, से आप उर्दू की अब जनरेट करते रहें, so you now have pairs. Okay, so I think that's essentially it. So you also nowadays do have multilingual machine translation systems. So encoder decoder models that have been trained on multiple pairs of languages. आप उनको सिंपली एक लैंग्वेज दें और दूसरी लैंग्वेज दें, वो बता दें ये दो लैंग्वेजेस कौन सी हैं, वो खुद ही उसकी ट्रांसलेशन कर देंगे. So those are also available, not just for two languages, multiple languages. So maybe English, French, English, Spanish, English, uh, and of course उनके आपस में भी Spanish, English and French, Spanish, uh, French, Chinese and so on. उस तरह का मॉडल लेट से अवेलेबल है, तो उससे भी आप बाय द वे एडिशनल टेक्स्ट निकाल सकते हैं. Okay, so I think that kind of brings us to the end of our discussion on machine translation, as well as a general discussion on tasks that involve generation. So that includes, for example, machine, so that includes summarization as well as paraphrase generation as well as question answering. But question answering थोड़ी सी different है, which we'll briefly talk about again later on. ठीक है. So now let's any questions? So now let's move back to our discussion on pre-training, post-training, prompt engineering. We would like to summarize it in a broader picture so that you get a better idea. So broadly, there are two types of things. So we have pre-training and post-training. ठीक है? So pre-training basically क्या है? So pre-training में basically depending on, this is learning a
language model. So this language model can be a causal language model or autoregressive language model, or it could be a bidirectional model like BERT. For each of these two cases आपको पता है कि loss function different है और input output pairs different चाहिए आप, right? We have already discussed this. Causal में next word prediction हो रही है, आपके जो bidirectional में है mass word prediction हो रही है. तो mass word is usually somewhere in between a running text. ठीक है? और by the way, mass language model में आपने mass language modeling क्रॉस एंट्री पे लॉस लगता है, प्लस समटाइम्स वी आल्सो ऑगमेंटेड विद नेक्स्ट सेंटेंस प्रेडिक्शन टास्क एंड उसको भी लेके हम इसको अपडेट करते हैं मॉडल को. ठीक है. सो वी विल यूज द ओरिजिनल लॉस फंक्शन एंड आवर डेटा which is usually self supervision, so you don't need any human annotation for these tasks. कोई ह्यूमन एनोटेशन नहीं चाहिए, लेबल्स आपके पास ऑलरेडी लैंग्वेज में अवेलेबल है. ठीक है. सो प्री ट्रेनिंग हमने की यूजिंग आवर अप्रोप्रिएट लॉस फंक्शन और पूरा नेटवर्क अडाप्ट किया. ठीक है. सो दिस इज प्री ट्रेनिंग and through this pre-training the model has learned the language and it has in particular learned the specific task that you have asked it to do. For example, causal model में next word prediction वो सही कर रहा है, and in the case of BERT mass word prediction सही कर रहा है या next sentence prediction सही कर रहा है. ठीक है. अब इस मॉडल को डायरेक्टली आप यूज करें तो इट विल डू वेल इन दोज टास्क, बट जैसे आप जीपीटी यूज करते हैं विच इज बाय द वे ओरिजिनली ए कॉजल मॉडल, वो सिर्फ जनरेशन नहीं करता, वो आपके क्वेश्चंस भी आंसर कर रहा है, राइट? सो फॉर एग्जांपल लेट्स से इफ यू हैड ए प्योर कॉजल मॉडल, उसको आप मैं क्वेश्चन देता हूँ, लेट्स से so I don't know, I'm trying to think of an example. So sun rises in the east. तो लेट्स से मैं ये सेंटेंस देता हूँ, डज द सन राइजेस इन द ईस्ट. सो दिस इज ए कॉन्टेक्स्ट. नेक्स्ट वर्ड जनरेशन हमने करनी है. लेट्स से प्योर मेरे पास प्री ट्रेन्ड मॉडल है यूजिंग ए कॉजल लॉस फंक्शन. आई गेव दिस फंक्शन एज इनपुट और मैं कहता हूँ कि नेक्स्ट मुझे वर्ड जनरेट करे. So most likely it will generate, it will not kind of answer this question. It will actually generate this continuation of this sentence. Does the sun and sets in the west? Probably ये आगे वो generate कर देगा. It will not go and answer this question to you. Yes, the sun sets rises in the east, because it has been trained on that particular task, which is next word prediction or next word generation. ठीक है. तो इस तरह की एडिशनल टास्क के लिए वी हैव टू डू पोस्ट ट्रेनिंग. ठीक है. पोस्ट ट्रेनिंग हमने 2 लेक्चर्स पहले डिस्कस की थी. सो पोस्ट ट्रेनिंग में कई चीज़ें हैं, 2 चीज़ें एक्चुअली प्राइमरीली, और भी हैं बाय द वे, बट प्राइमरली 2. वन इज इंस्ट्रक्शन ट्यूनिंग एंड द सेकंड इज प्रेफरेंस अलाइनमेंट. इन बोथ ऑफ दीज केसेस हमारे पैरामीटर्स भी चेंज हो रहे हैं फिर से. ठीक है. पैरामीटर्स चेंज हो रहे हैं. अब कितने पैरामीटर्स हो रहे हैं, सारे हो रहे हैं या पार्शली हो रहे हैं, दिस वुड डिपेंड ऑन द डिजाइनर्स. ठीक है.
बट पैरामीटर चेंज हो रहे हैं। इंस्ट्रक्शन ट्यूनिंग में क्या है, वी वुड लाइक द मॉडल टू address, be able to follow instructions in general. जैसे हमने ऊपर क्वेश्चन लिखा था, डज द सन राइजेस इन द ईस्ट, दिस इज काइंड ऑफ एन इंस्ट्रक्शन, इट शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड दिस एज ए क्वेश्चन एंड देन आंसर इट अप्रोप्रियटली। तो उसके लिए हमारे पास जो इंस्ट्रक्शन ट्यूनिंग के लिए जो हमारा टेस्ट सेट बनेगा, उसमें यही होगा, हम लिखेंगे डज द सन राइजेस इन द ईस्ट, इसका जो हम आंसर देंगे वो हम ये देंगे, यस द सन राइजेस in the east. So this is an additional training data set which consists of input output pairs that you process through your large language model and maybe using the same loss function. हमने context दिया does the sun rises in the east, हम next sentence ही generation कर रहे हैं, next word generation ही कर रहे हैं, but now we are forcing it to generate yes it rises in the east. ठीक है। सो इस तरह जब आपको मल्टीपल इसको चीज़ें देंगे तो इट टेंड्स टू लर्न कि जब इस तरह का मेरे पास कोई इनपुट आएगा मैंने आंसर करना है, नॉट सिंपली जनरेशन करनी है। सो दिस इज कॉल्ड ट्यूनिंग द मॉडल टू अंडरस्टैंड इंस्ट्रक्शंस। और इसके लिए आपके पास इंस्ट्रक्शन ट्यूनिंग डेटा सेट्स होने चाहिए एंड दे आर वेरियस अवेलेबल आउट देयर। यूजली ये काम आपको जीपीटी में, क्लाउड में या लामा में पहले करके दिया हुआ है, वी डोंट हैव टू डू इट, दे हैव ऑलरेडी डन huge amount of instruction tuning on it. So for example, if you recall, 2 साल पहले तक GPT or ChatGPT did a very bad job on, for example, math. उसको एक सिंपल 6+7 का क्वेश्चन भेजें तो वो आगे कुछ और जनरेट करने शुरू कर देगा। इट वुड नॉट आंसर दिस क्वेश्चन 6+7 = 13। बट आज अब आप 6+7 जीपीटी को देंगे तो टेल यू इट इज 13। सो how it has done that, because it has also learned this कि इस तरह की चीज़ें मुझे मिलेंगी तो मैंने सिंपली एक जनरेशन नहीं करनी, मैंने उसका एक आंसर कंप्यूट करके निकाल के निकालना है। So nowadays actually ChatGPT can do for example even complex mathematical proofs भी वो कर लेगा, just because it has been tuned on huge amounts of such uh, input output pairs where you have a question and you have the corresponding answer, which is not just a sentence that follows from your input. It's an answer to that. So in this way, you actually now forcing your model to do question answering. So this actually brings me to question answering also. So questioning answering 5 years back was a separate domain. अब ये question answering is now done by LLMs. Why? How are they done? By instruction tuning. पहले हमको क्वेश्चन आंसरिंग के लिए न्यूरल मॉडल्स ही थे 5 साल पहले, पर आपको सेपरेट ट्रेन करने पड़ते थे। नाउ इट इज डन बाय लार्ज लैंग्वेज मॉडल बिकॉज वी हैव इंस्ट्रक्शन ट्यून देम ऑन लार्ज अमाउंट्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस and it is able to understand that there is a question and then I need to answer it. ठीक है। So this was instruction tuning. Instruction tuning में भी आपको ट्रेनिंग करनी है of the entire model or part of the model. And for that, you do need data where you have input and output, just like you had input or output for pre-training. और generally loss function वही रहेगा, usually change नहीं होता, जो आपका original language model का loss function था। So now let's move on to preference alignment. ये क्या चीज़ है? Preference alignment is a subtle feedback to the model on preferring
or you can say choosing one answer or one response over others. ठीक है. So again इसके लिए भी आपको डेटा सेट बनाना है. So बाय द वे आजकल जैसे आप चैट जीपीटी यूज करते हैं, जीपीटी आप चलाते हैं, तो कई दफा आपको दो आंसर्स देता है और आपसे पूछ रहा होता है प्रेफरेंस अलाइनमेंट. डू यू प्रिफर दिस आंसर और दैट आंसर? दैट इज प्रेफरेंस अलाइनमेंट. उसने दो आंसर जनरेट किए, एक 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 तरीके से किया, एक दूसरे तरीके से किया. आस्क यू विच वन यू प्रिफर. So that's preference alignment, and it's doing it. You are asked to do it. Of course, in post training, they have already done some preference alignment. Usually, wo preference alignment is focused on specific things, like, for example, reducing harm. So, for example, so toxic comments. Let's say कोई आ रहे हैं तो वो आप आउटपुट आ रहा है तो वो कहेंगे नो, डू नॉट प्रेफर टॉक्सिक, प्रेफर नॉर्मल थिंग, फॉर एग्जाम्पल. इसलिए इसी तरह सेफ्टी के इश्यूज हैं, सिक्योरिटी के इश्यूज हैं, वो आप उसको रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल, इफ समवन आस्क ए क्वेश्चन अबाउट मेकिंग अ बॉम्ब, तो ये प्रेफरेंस अलाइनमेंट में उन्होंने उसको कहा होगा कि जब ये आंसर ये वाला ना दे, वो वाला दे कि आई एम नॉट ऑथराइज टू टेल यू अबाउट हाउ टू मेक अ बॉम्ब. So this is done through preference alignment. As I said, preference alignment is not generating the entire sentence, just preferring one over the other. और ये feedback फिर incorporate की जाती है into the model through a reinforcement learning framework. ठीक है. It's not your regular gradient descent, it's reinforcement learning. ठीक है. So इसमें भी as I said, फीडबैक जारी है, डेटा सेट चाहिए आपको, और उस फीडबैक से मॉडल भी चेंज हो रहा है. पूरा मॉडल चेंज हो रहा है या पार्ट ऑफ द मॉडल चेंज हो रहा है, दिस इज अप टू यू. यूजली पार्ट होता है चेंज, बट अगेन दिस इज ए ट्रेनिंग प्रोसेस. ठीक है. सो रिइंफोर्समेंट लर्निंग के जो टेक्निक्स हैं, वी वोंट बी एबल टू गो इनटू द डिटेल इन दिस कोर्स, बट इन जनरल इवन इफ यू वांट टू डू इट इन प्रैक्टिस, तो आप कोई टूल ही यूज करेंगे, कोई एपीआई यूज करेंगे. द आइडिया इज दैट यू सिंपली नीड टू हैव दीज पेयर्स of input and output preference, and then that feedback goes back into the system to update the model. Okay, so these are the two main forms of post training. So what is in context learning? So this is another concept. So generally in context learning is not doing any training or tuning. It's simply uh, giving a context to the model, and based on that context, the model is then answering your or giving a feedback to you. So हम इसको in context learning कह रहे हैं, but nothing changes in the model. We don't update the model. ठीक है. So no model update occurs. ठीक है. So this is simply a prompt. आप समझ लें कि जो आपने context दिया ये prompt है. उस prompt को लेके वो आगे कुछ जनरेशन करने की कोशिश कर रहा है. So you already know कि आप एक इस आपने काम करना है, उसको डिफरेंट तरीके से पूछ सकते हैं, और हर दफ़ा जो आप एक डिफरेंट तरीके से पूछेंगे, वो एक डिफरेंट आंसर जनरेट करेगा. तो दिस इज इन कॉन्टेक्स्ट लर्निंग. कोई पैरामीटर अपडेट नहीं हुए, कोई कुछ नहीं हुआ, जस्ट बेस्ड ऑन योर कॉन्टेक्स्ट विच इज इन योर प्रॉम्प्ट, एंड द मॉडल दैट हैज ऑलरेडी बीन लर्नड वो उसको अप्रोप्रिएट जवाब देने की कोशिश करेगा. ठीक है. अब इसी सेटिंग में फिर लोगों ने जीरो शॉट और फ्यू शॉट स्ट्रेटजीज बना ली हैं.
ठीक है, इसका क्या मतलब है कि अगेन कोई ट्रेनिंग नहीं हो रही, बट वी आर नाउ गिविंग ए बिगर कॉन्टेक्स्ट। जीरो शॉट में तो ऑफकोर्स कोई कॉन्टेक्स्ट, वही एक क्वेश्चन ही है, बट फ्यू शॉट में हमने बिगर कॉन्टेक्स्ट दे दिया, उसको एग्जांपल्स दे दिए कि मैं ये इस तरह करूंगा तो ये आंसर मुझे देना है, एंड देन यू आस्क, लेट इट आंसर द लास्ट वन। सो फॉर एग्जांपल लेट्स से आपने कोई सेंटिमेंट क्लासिफिकेशन टास्क करनी है, या लेट्स से ट्रांसलेशन की करनी है लेट्स से, तो यू कैन डू समथिंग लाइक, so I don't know. So here are some examples of Urdu and English sentence pairs. So now you give Urdu and English. एक एग्जाम्पल दी, एग्जाम्पल टू दी आपने, ठीक है, एग्जाम्पल थ्री दी, एंड देन आगे आप कह दें प्लीज जनरेट द इंग्लिश, इंग्लिश फॉर यू दें। आपने यहाँ कुछ उर्दू लिखा, मेरा नाम साकिब, आमिर कर देते हैं, आमिर है, ठीक है ना। अब वो इसको, उसने कुछ एग्जाम्पल्स देख लिए हैं कि वो कोशिश करेगा उसको विद इन द मॉडल दैट ऑलरेडी हैज टू फॉलो दोज इंस्ट्रक्शंस एंड आंसर इट। अगेन दिस इज इन कॉन्टेक्स्ट, आपने कोई मॉडल अपडेट नहीं किया, सिंपली उसको एक उसी कॉन्टेक्स्ट के अंदर उसको थोड़ी सी एग्जाम्पल्स दे दी हैं, एंड देन यू आर होपिंग कि जो आपने लास्ट क्वेश्चन पूछा है उसका वो आंसर सही दे दे, ठीक है। सो बाय द वे, इंस्ट्रक्शन ट्यूनिंग जब आप कर रहे होते हैं, जो आप चैट जीपीटी वाले, क्लाउड वाले कर रहे होते हैं, वो इस तरह के एग्जांपल्स देते हैं उसको, सो दैट इट लर्न्स हाउ टू डू दिस, सो दैट जब आप इस तरह की कोई चीज़ देंगे तो वो उसको अप्रोप्रिएटली कर लेगा। अब इसी सेटिंग में लेट्स से आप कोई एग्जांपल नहीं देते और एक उर्दू देते हैं और फिर कहते हैं ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, वो भी मे बी कर लेगा इफ इट नोज दैट नॉलेज, बट इफ इट डजंट नो दैट नॉलेज और आपने उसको कुछ पहले प्रोवाइड कर दिया, देन इट विल डू ए बेटर जॉब, ठीक है। सो सो इन कॉन्टेक्स्ट अडाप्टेशन कह लें या आंसर अपडेट कह लें, इट्स नॉट एक्चुअली प्रॉपरली अंडरस्टूड येट। इसकी थ्योरी अभी तक लोगों को समझ नहीं आई कि किस तरह मॉडल चेंज आंसर अपने अपडेट कर देता है, मतलब डेप्थ की थ्योरी नहीं पता। ऑफ कोर्स वी अंडरस्टैंड कि इट काइंड ऑफ अंडरस्टैंड्स योर कॉन्टेक्स्ट और उस कॉन्टेक्स्ट को यूज करके आपको आंसर दे रहा है, बट विद इन द मॉडल कोई हमने चेंज नहीं किया। So some interactions between the models would help you give better results. तो इसकी depth जो theory है, no one really understands up till today. So theory is a kind of a black box. So practical understanding is not well known. Of in context learning is not well understood. So well known. ठीक है, but it works. बट इसमें कोई मॉडल चेंज नहीं हो रहा, यू सिंपली आपका प्रॉम्प्ट आपने बड़ा छोटा करके उसमें एग्जांपल डाल के आपने अच्छा आंसर निकालने की कोशिश की है, ठीक। दिस इज कॉल्ड इन कॉन्टेक्स्ट लर्निंग। अब इसी की जो एक वेरिएशन थी जो फैजाद ने लास्ट टाइम डिस्कस की थी, विच वाज प्रॉम्प्ट बेस्ड ट्यूनिंग। सो वो भी इन कॉन्टेक्स्ट लर्निंग ही है, बट यहाँ थोड़ी सी हम अडाप्टेशन कर रहे हैं, ठीक है। वो अडाप्टेशन क्या है, हमने ऐसे उसको प्रॉम्प्ट दिया है जिसमें कोई आपने एक मार्क्स डाला हुआ है, मेंबर को इसने कहा था मास्ट कोई था टोकन, इस टोकन का जो आउटपुट है उसके आगे एक हेड हम लगा देंगे और उस हेड को बस सिर्फ हम ट्यून कर देंगे गिवन ए स्मॉल डेटा सेट, ठीक है। उस हेड के पैरामीटर्स जो हैं वो हम ट्यून करेंगे गिवन आवर डेटा सेट, एंड देन वी विल गेट बेटर रिजल्ट्स। So this is again in context learning with a bit of tuning. So this is called prompt based tuning.
सो दिस इज डिफरेंट फ्रॉम स्टैंडर्ड फाइन ट्यूनिंग. स्टैंडर्ड फाइन ट्यूनिंग में तो आपको इनपुट आउटपुट पेयर्स उस लॉस फंक्शन को देने पड़ते हैं और पूरा यूजली पूरा मॉडल या पार्ट ऑफ द मॉडल अपडेट होता है. यहाँ सिर्फ एक टोकन का आउटपुट का हेड आप अपडेट कर रहे हैं और वो टोकन आपने एक प्रॉम्प्ट की फॉर्म में डाला हुआ है. मतलब एक स्पेसिफिक एक टेम्पलेट है, ऑफ कोर्स दैट विल वेरी अक्रॉस डिफरेंट टास्क, और उसको आपने ट्यून करके उसको आंसर बेहतर करने की कोशिश की है. सो काइंड ऑफ ये एक स्पेक्ट्रम है ऑफ हाउ वी अडाप्ट एंड यूज करंट लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स. बट इसके अलावा भी कुछ वेरिएशंस हैं. तो एंड दिस इज ऑफ कोर्स इवॉल्विंग विद टाइम. ठीक है. सो so I think I've talked quite a bit today. So I will stop here. So are there any questions? So we do have a quiz inshallah on Monday. आपकी assignment वेडनेसडे को, पर हमने वो अपनी प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशंस भी स्केड्यूल करनी है, तो क्विज डाल देंगे तो देन वी वोंट बी एबल टू, टाइम नहीं होगा हमारे पास ड्यूरिंग क्लास टाइम. सो आई डोंट नो, मतलब स्केड्यूलिंग का इश्यूज आ रहे हैं. सो आई डोंट नो हाउ टू हैंडल दिस. क्विज तो हमने लेना है. वेडनेसडे को करेंगे तो देन ऑब्वियसली वो टाइम शॉर्ट हो जाएगा, आपकी प्रेजेंटेशंस का इशू होगा, unless of course we decide to move the presentation somewhere else. So anyway, अभी तक तो ये मंडे है. we will let you know if there is any change. ठीक है. uh, so we will discuss and let you know. नहीं, बट संडे जो है वो आपके पास, आर यू गाइस देन अवेलेबल ऑन संडे फॉर मोर देन 2 hours? इफ दैट इज द केस तो फिर तो ठीक है, बिकॉज जो प्रेजेंटेशन हमने स्केड्यूल करनी है तो वो लॉट ऑफ 75 मिनट्स में स्केड्यूल नहीं हो सकेंगी. अच्छा ठीक है. Okay, so that might be an option. ठीक है. So all presentations on Sunday and then we may continue our discussion till Wednesday, और फिर Wednesday तक हमारा फिर क्विज चले जाएगा. ठीक है. That is one option. ठीक है. So I will let you know. ठीक है. So this is one option. I will let you know. Any other comment?